अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान और आप देख रहे हैं एसपी टेक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप किस तरह विजुअल स्टूडियो कोड को C++ के साथ सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ आपने जाना है डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ेगा लैंग्वेजेस में, और लैंग्वेज में जाकर वहाँ आपने सेलेक्ट करनी है C++। वहाँ आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा, ओवरव्यू में सारा लिखा होगा। सबसे पहले यहाँ आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है मिन जी डब्ल्यू इंस्टॉल करने के लिए यहाँ तो आप डायरेक्ट मिन जी डब्ल्यू इंस्टॉल कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, या आप M-sys2 से इंस्टॉल कर सकते हैं। M-sys2 से इंस्टॉल करने के लिए आपको वहाँ एक कमांड दी गई होगी पैकमैन S से 4 ऑप्शन में। वहाँ वो कमांड इंटर करेंगे तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपने फिर वाई पे क्लिक करना है, वाई पे क्लिक करेंगे तो यस हो जाएगा। इंटर वाई when prompted with the to proceed with installation। 7th step इसका ये है कि add the path to your min-gw64 bin folder to the windows path environment variable by using the following steps। पहला स्टेप ये है in the windows search bar the type setting to open your windows setting। second step है search the edit environment variables for your account। third step है in your user variable select path variable and then select edit। fourth है select new and add the min-gw64 destination folder you recorded during the installation process to the list। if you selected the default installation steps, the path is cmc64 ucrt64/bin। Check that 8th step here. Check that your min-gw64 tools are correctly installed and available। Open a new command prompt and type gcc-version g++-version gdb-version। You should see output that states which versions of gcc gdb you have installed। if this is not the case, make sure your path entry matches the min-gw64 binary location where the compiler tools are located, or reference the troubleshooting section। Then you should create a hello world app to make sure the compiler is installed and configured correctly. Let's create a hello world C++ program। Create a C++ file। First step, on Windows, launch Windows command prompt, enter Windows command prompt in the Windows search bar, then you have a command prompt open। On Mac OS and Linux, you can enter these commands in the terminal। Second step, run the following commands। They are creating an empty folder called projects where you can place all your VS Code projects। The next commands create and navigate you to a subfolder called Hello World। From there you are opening Hello World directly in VS Code using the code command mkdir projects cd projects mkdir hello world cd hello world code। The code command opens VS Code in the current working folder, which becomes your workspace। Accept the workspace trust dialog by selecting yes I trust the author। Since this is a folder you created, now create a file called hello.cpp with the new file button in the file explorer or file new file command। Add hello world source code। Paste in the following source code: #include #iostream int main stcout hello world end line। Now press Ctrl+ save S to save your file। You can also enable autosave to automatically save your file changes by checking autosave in the main file menu। Now you need to run hello world cpp। Make sure you have hello world cpp open so it is the active file in your editor। Press the play button in the top right corner of the editor। Choose C++ G++ exe build and debug active file from the list of detected compilers on your system। You are only prompted to choose a compiler for the first time you run hello.cpp। This compiler becomes default compiler set in your tasks.json file। After the build succeeds, you should see hello world appear in the integrated terminal। Congratulations, you just run your first C++ program in VS Code। The next step is learn more about the Microsoft C++ extensions language features such as IntelliSense, code navigation, build configuration, and debugging uses one of the tutorials in the next session। Thank you so much। Make sure you subscribe the channel Tech SW and
click on the notification icon.